दस्तक, जिसे दिए बगैर कोई दर खुल नहीं सकता और दर खुले बगैर कोई हकीकत सामने नहीं आ सकती। इसीलिए आगे के सफर में दस्तक का साथ दीजिए। Project Dastak is a student-led project which is aimed at highlighting the role of the entertainment industry in communicating concepts, ideas, themes, and it also challenges some toxic narratives जो कि हमारी entertainment industry में exist करते हैं। Today we have with us Saman Ansari, a Pakistani television and theatre actress who made her debut in 2014 and has emerged in various dramas since then. A few of those dramas are Jugnu, Karb, Mohabbat Tumse Nafrat Hai, Mr. Shamim, Khani, and of course the ongoing drama Fairy Tale. We can't express how excited we are at the prospect of conducting your interview. So, in your opinion, what constitutes a toxic narrative in the Pakistani drama industry? In my opinion, toxicity may be very different from how you view it. I could base that on a generation gap. If I'm not wrong, you're all Gen Zers. I'm Gen X. तो मेरी नजर में जो चीज टॉक्सिक नहीं है वो शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक लगे. Am I correct about that? Yes, ma'am, my purpose Yes, it could be true. That's very true. कि हर किसी का different perspective. Right. So अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं, मेरे नजरिए में एक टॉक्सिक कैरेक्टर वो होगा जो without any reason is always hell bent on making somebody's life miserable. It could be male, female, young or old, a person in the position of authority, or one who is extremely insecure and wants to get attention just by indulging in negative and toxic behavior. Okay, so That's we interviewed, a director as well, another actor as well, and a psychologist. So they all had a mutual question for us. Okay, what do you define as toxic? So I believe you have, perfectly described it, and very briefly and precisely described the definition of toxic in the entertainment industry. So our next question is related to it as well. Okay, can you provide us with some examples of the toxic narratives that you may have observed in the entertainment industries or the dramas? Acha, okay. Without naming any specific projects, मैं आपको generally बताती हूँ. The dramas where a stereotypical mother-in-law is shown being extremely finicky, extremely unappreciative, extremely nasty in her choice of words, in her choice of actions towards a new daughter-in-law, that is probably the most common kind of toxic character that's shown in females. Secondly, when they show a relationship in which the man, whether he is a husband or a boyfriend, I don't know if I'm even allowed to say that, but somebody that a female is in a relationship with, or to show his masculinity, to show his control, uska behavior bahut zyada negative ho jata hai, from things like raising his voice, using physical, not violence always, but in terms of haath pakad ke rok liya, jhatka de diya, ye kya kar rahi ho, or towering over the female, showing that I am bigger, I am stronger, so you need to be under me. Controlling things like spending of money, like use of telephone, kiska phone tha, cell phone pe kiska message aaya hai. All of this constitutes toxicity. Now, Justify भी कर देते a हैं. very sweet relationship of a mother and child can also be extremely toxic, or the father and child, when their control comes to a point jahan pe aulad ki marzi ke upar unki marzi implement ki jati hai with just this blanket statement, we know better. हमें तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सारे डिसीजंस लेने का हक इसलिए because we gave birth to you. That is also toxic behavior. और मैम आई बिलीव कि एक जो बड़ा मेंटल अब्यूज बहुत दिखाया जाता है,
बातें करना, वो बहुत एक हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, और उसको लोग इतना नोटिस भी नहीं करते हैं, दे जस्ट लेट इट पास अवे, बट इट्स समथिंग इट्स वेरी फ्रीक्वेंट, एक मेंटल अब्यूज, एक ऐसी चॉइस ऑफ वर्ड्स होना, इनसेंसिटिव होना, ह्यूमर भी इनसेंसिटिव और होता फिर है उसको टाइम। आगे से जस्टिफाई भी कर देना कि इट वाज फाइन, कुछ नहीं होता, चंद अल्फाज ही गए थे। देखिए, justification तो again it's about your perspective and how you translate something, ठीक है ना? मुझे on a personal level क्या चीज सबसे ज्यादा बुरी लगती है? Not somebody coming and saying, look, my biceps are bigger than yours, and I don't know which came first. If it was our society that inspired the industry to start using, terminology जिसमें लगता है कि अच्छा ये तो तारीफ है, लेकिन वो आखिर में there is some kind of backhanded attempt to demean the other person. The person with the feeling that you are not good enough, that is possibly the worst kind of abuse a person can be put through. All right, moving on. अब ये जो सारे आपने toxic narratives के examples दिए हैं, how do you think they affect the audience and the society? अच्छा, आप लोगों से सवाल ये कि who do you think our primary audience is for television dramas? Mostly, तो I think We believe that mostly the audience that are there on the television are mostly between the middle-aged women to young adolescent girls watching dramas. अच्छा, middle age आप numbers में डाल के मुझे बताएं. What is your concept of middle age? Right, my 30 concept to of age is 35. definitely between 35, between 40, or as she has already said, 30 between 35. बट मैम दूसरी तरफ एक वो भी Teenagers है, as ऑडियंस well. है जो हमारी जो 20 years and 18, वो जो गर्ल्स होती हैं जो I उस वक्त agree. उन हीरोज को फैंटेसाइज कर रही होती हैं, एक वो वाली भी Okay, ऑडियंस है। ठीक है. अच्छा, ठीक है. So you're right about that, but you need to move the age bracket a little higher, because how old are generally, let's say, girls when they become young moms? Aajkal, early to late 20s, right? Yes. Yes, I agree. Okay, ठीक है. So do you think the young moms are sitting there with their not so controllable infants and toddlers wailing away while watching a drama? Definitely not. Okay. Is it women who are working in offices all day or doing some other kind of job that brings them home extremely tired, just enough time to kind of wrap up their day, spend time with their family, and then go to bed and prepare for the next day? Or do you think हमारी सबसे बड़ी audience वो खवातीन है जो घर रहकर बाहर के माहौल से उस हद तक एक्सपोज नहीं होती हैं जितनी women who would be interacting with the outdoor world would? Yes, ma'am. Yes, Lifestyle I agree. time Yeah. their exposure The नहीं second होता. one. Okay, ठीक है. So yes, regardless of age, it is about the interaction the girls or women have with the outside world that makes them impressionable. And because हमारे ड्रामे हमारी सोसाइटी की ही स्टोरीज को लेकर उनको इन्हांस करके, उनको ग्लैमराइज करके प्रेजेंट करते हैं, इसलिए लोग उनके साथ रिलेट कर पाते हैं. अब इन्हीं लोगों को, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं गेम ऑफ थ्रोन्स दिखा दूं, they will instantly say this is a fantasy, ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, हमें समझ में नहीं आया. ठीक? But if I ask you to go and watch it, you will not only enjoy it in the genre that it is, but you may even fantasize about, wow,
What kind of a life would that be if we had some magical abilities, if we lived in a fantasy kingdom? So coming back to the question you asked, the young girls who are fantasizing about their love lives, their married lives, कि शादी के बाद फूल खिलेंगे और पत्तियां बरसेंगी and all of that, वो शायद escapism के लिए ड्रामों को देख रही हैं. And the women who are at an older age are watching them because they know कि मेरे हमसाई के घर में यही स्टोरी चलती है, मोहल्ले की फलाना खातून के घर में भी यही कहानी थी, तो हमारे लिए तो ये बिल्कुल वही चीज है जो हम आए दिन देख रहे हैं. सबसे ज्यादा impressionable are the younger girls who don't have exposure to the outside world. और It does leave an डेवलप भी हो impact, जाता है पर्सपेक्टिव्स. but it leaves an impact, but it is not something that the entertainment industry has created. Toxicity or negativity or social issues हैं, तो writers उनके बारे में लिखते हैं, तो फिर channels कहते हैं कि हाँ इस पे हम ड्रामा बनाएंगे. And of course, with good actors and actresses and that dash of glamour, it becomes what you all call a glamorized version of toxicity in the industry. मैम हमने ना एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया कि इट्स अ कंटिन्यूअस सर्कल. सो इट्स सोसाइटी इन्फ्लुएंसिंग दोज नैरेटिव्स एंड देन एट सम पॉइंट्स इट्स द नैरेटिव्स इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी. तो वो एक कंटिन्यूअस ठीक है. सर्कल चल रहा है. अगर ये I agree with her. But tell me something कि अगर इतना ज्यादा इम्पैक्ट होता हमारे ड्रामों का, तो जब हम किसी पॉजिटिव मैसेज का ड्रामा बना के लगाते वो भी हैं होना चाहिए था. तो वो फ्लॉप क्यों हो जाता है? उसका असर क्यों नहीं होता है? उसकी रेटिंग्स भी नहीं आती हैं, उसकी व्यूज भी नहीं आती हैं, उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिलती, क्योंकि कोई अच्छी बात जहां हम करने लगे तो लोग कहते हैं नहीं देखें हम तो एंटरटेनमेंट के लिए बैठते हैं ना, तो ऑडियंस एकदम एंटरटेनमेंट में रिड्यूस तो हो जाती है. हमने एक डायरेक्टर का यस इंटरव्यू लिया ना, उन्होंने कहा कि डिमांड है तभी ऐसे ड्रामे बनते हैं. लोग डिमांड खत्म करेंगे तो ड्रामे एग्जैक्टली खत्म हो जाएंगे. provided us with a very बिल्कुल. different perspective. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बताया था कि डिमांड है तो ही तो ड्रामे ये बन रहे हैं. And to back that up, he also mentioned कि audience की जो demand होती है, audience के जो interests होते हैं, we know कि that is business के तौर पे हमारे लिए beneficial है, but at the same time that is beneficial for the audience as their interest is being portrayed on the online entertainment media, right? So that is what we grasped from their interview, and that is the question we utilized to ask you कि आप भी हमें अपना इस point से explain करें अपना perspective. So when you're given an opportunity to play a character or a role, is there some specific sort of criteria that you have in mind when you're making your decision to make that to portray that character? Yes. So my criteria comes in as an actor, ठीक है ना, as a performer. It needs to be challenging for me. It needs to be as far from my personality as possible because I'm not coming to show who Saman Ansari is. I'm coming to make the character believable. अब वो चाहे it's playing the character of a 70-year-old woman or a young and vivacious, mother-in-law, as you're seeing in Fairy Tale 2. It's both extremes are very different from me. I've done a drama on women's health, which was called Sammi, in which I played the mother of 5 girls. ठीक है ना? उसमें क्या इशू था कि वो जो एक बहुत बड़ा सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि वो बेटे की ख्वाहिश में they kept having girls after girls after girls. The woman's health kept declining and the boy never came. And, she just kept getting traumatized after each pregnancy. कि अच्छा एक और बेटी हो गई. So it's मेरा decision based होता है on the fact that the character should be challenging to me as a performer. Now, if I get the character of कोई बहुत ही evil किस्म का इंसान, I have to see कि उस evil किस्म के इंसान का असर किस पे पड़ रहा है. Who is that character directly interacting with? Am I going to choose to play an evil mother? Probably not. I would say no, as challenging as it may be, because यहाँ पे मेरा एक personal value system conflict हो जाता है. I would not do that. But would I play the character of a person who commits a murder? Yes, if that murder was justified or it was accidental,
I would absolutely do that. So not based so much on कि story negative है या story toxic है, more about वो character मुझे कितना challenge कर रहा है, मैं कितने precise तरीके से उसे perform कर सकती हूँ कि लोगों को लगे ही ना कि मैं acting कर रही हूँ. That's what entertainment is, right? If I'm doing even the most positive character and it's unbelievable, तो लोग कहेंगे क्या यार ओवर एक्टिंग करती है, क्यों इसको बार बार कास्ट कर लेते हैं. आई थिंक ये हमारी ऑडियंस का बड़ा एक अजीब सा ये तरीका है कि कोई अगर एक एक्टर और एक्ट्रेस एक कोई कैरेक्टर करेगा, समटाइम्स मे बी एन इविल कैरेक्टर, सो दे स्टार्ट ब्लेमिंग द एक्टर और एक्ट्रेस फॉर दैट, कि तुमने ऐसा कैरेक्टर क्यों लिया, ये वाला कैरेक्टर, लाइक हाँ व्हाई वुड यू एग्जैक्टली, डू हालांकि दैट. एक्टिंग को अपलॉड करो कि एक्टिंग कितनी अच्छी थी कि इट एक्चुअली सीम्ड इविल. नहीं 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 भाई, बहुत कम लोग हैं जो एक्टिंग को अपलॉड करते हैं. आई डोंट नो इफ यू गर्ल्स नो अबाउट द ड्रामा बादशाह बेगम. So last year I was playing Hakim B's role, who was the original Bacha Begum, and this is a lady who's about 68 to 70 years old, and she is absolutely cruel. ठीक है ना? But that cruelty was justified by the setup that they had shown for that fantasy land, which was based on reality. पीरामपुर, ठीक है ना, वहां के लिए वही उसी किस्म का कंट्रोल और उसी किस्म की गवर्नेंस होती थी, इसलिए दैट कैरेक्टर वाज जस्टिफाइड. उसके बाद जब मुझे लोग बाजारों में या सड़कों में मिले, वो ये कहते थे, मैम आपने इतना गंदा कैरेक्टर क्यों किया, मैम प्लीज ऐसा मत किया करे. मैं कहा भाई वो कैरेक्टर था, नहीं आप ऐसी नहीं है, आप ऐसा. सो यस, अ लॉट ऑफ पीपल गेट सो इन्वॉल्व्ड विद दैट कैरेक्टर कि वो रियल पर्सन और कैरेक्टर की लाइन ब्लर हो जाती है, एंड दे थिंक दैट इट्स समन who's become that evil person. And समन को ऐसा नहीं करना चाहिए, बट समन नहीं थी ना, वो तो हाकिम भी थी. मूविंग ऑन, आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेप्स लेने चाहिए कि हमारी जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है वो हेल्दियर नैरेटिव्स को प्रमोट कर दे? या तो ये है कि I don't know, there is no magic solution to this That's true. unless and until this entire community of media directors, writers, producers and actors decides कि अब जो भी चीज हम करेंगे for the betterment of the nation or the audience, it's always going to have the least amount of negativity and toxicity in it. अगर सब ये मिलके करें तो शायद एक वो tidal wave बने जिससे एक impact आए और वो repeatedly वही चीज चले. लेकिन this is in the utopian world. There are so many channels, and I just don't mean television channels. Up to online, there's so many avenues for people to pick and choose whatever they want to. तो मतलब लोग आखिर हॉरर फिल्म्स देखते. डायरेक्टर से बात की तो मैंने कहा कि कतरा कतरा मिलके जो है ना वो चेंज आता है. जो आपने लोगों से पिछले 50 साल से सिखा रहे हो, वी कैन नॉट अनडू दैट ऑल ऑफ अ सडन. तो आहिस्ता आहिस्ता सबका रोल प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. Right, and again that needs a lot of unity. So अगर एक डायरेक्टर, एक प्रोडक्शन हाउस या एक चैनल सिर्फ ये चीज इम्प्लीमेंट करे तो लोग के पास बहुत दूसरे ऑप्शंस हैं, एज आई सेड, कि या तो ये slowly and gradually evolve होगा like the director said, or it will have to be a hardcore revolution. Now देखिए, we don't live in a society which is communistic, so we can't really forcefully apply rules कि बस आप सिर्फ यही देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जिस चीज से लोगों को रोका जाएगा वो हमेशा उस चीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे. अब एक Agreed. आदत है लोगों को, दे आर enjoying this is their मसाला, this is what thrills them, देखेंगे भी फिर गालियां भी उसी चीज को देंगे, but this is what they're enjoying. If we suddenly stop doing this for them, they'll use VPNs, they'll go to
online, places where they can watch stuff, they'll get subscriptions. कहीं ना कहीं से तो वो देखेंगे और फिर यहाँ की viewership और कम हो जाएगी. But आहिस्ता आहिस्ता, yes. But with that said, I would like to say one thing. देखिए जो ड्रामे 8 से 9 बजे के टाइम में होते हैं या 8 से 10 बजे तक के भी, let's just talk about traditional channels. They are always considered mature content. It's not for people of impressionable ages to watch. So agar koi even under the age of 16, 17 usko dekh raha hai, no, that content is not for them. And obviously isme family setup and parenting plays a big role. I mean, it's known all over the world कि 8 बजे से पहले की programming जो है उसमें, let's say, evening ki jo hai, it's for the younger kids, and then the late evening is for like the teens, and then the nighttime programming is for the grown-ups. Because it doesn't always have to be something that is rated R, but a lot of topics and a lot of things are meant for a more mature mind. तो जाहिर है एक raw mind के ऊपर आप वो चीजें रख देंगे तो उनको लगेगा, oh, this is probably the way to do it. This is just like a TikTok trend. जब आप जब आप I एक should go out and start abusing हाँ, everybody I see, because this is what's happening in entertainment. Yeah, so the audience, yeah, it's not meant for them. हमने बहुत से लोगों के पर्सपेक्टिव्स दिए, तो उन्होंने कहा कि जो स्पेसिफिकली जो हमारे पेरेंट्स की एज के लोग हैं, उन्होंने कहा कि जब हम लोग बच्चे थे तो कोई 2 घंटे का टाइम आता था जब मामा बाबा कहते थे कि आउट ऑफ द रूम, यू आर Yep. नॉट वाचिंग दिस ड्रामा, दिस इज नॉट फॉर यू. एंड आई थिंक Yes. अगर हम लोग जब हॉलीवुड बॉलीवुड के देखते हैं तो बड़ा हम लोग कॉन्शियस, रेटिंग कॉन्शियस होते हैं, हम लोग बहुत ये करते हैं. तो आई बिलीव कि थोड़ा सा हमें अपने भी इंडस्ट्री में ये होने की जरूरत है. But ये है ना कि अगर ठीक है. parents So कह देते हैं कि let's don't say, YouTube, so they will watch somehow. YouTube पे बाद में देख लिया. Check and balance नहीं है ना. yeah, but YouTube पे parental controls होने चाहिए ना फिर. See, that's the thing. और अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी अब पाकिस्तान के खित्ते खित्ते में पहुंच चुकी. Even in the most remote areas, everybody has some form of a smartphone, and they know how to get onto the internet without really knowing that all that information that's coming in, whether it's through entertainment or silly things or whatever incorrect information, वो adjust किए जा रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि oh my god, ये gates खुल गए हैं, and this must be like heaven on earth because मुझे इतना कुछ पता चल रहा है. और people are getting so addicted to doom scrolling and just watching rubbish. They're becoming lazy. Their brains are becoming lazy. They're just getting this constant, hammering of so-called entertainment. So yeah, बहुत ज़्यादा controls in place, बहुत ज़्यादा checks in place होने होंगे. But with that said, I still think कि parents with young children, and I'm not saying teens right now, but 10 साल की उम्र से कम के जिन घरों में बच्चे हैं, parents need to make sure that their access to the internet is monitored, that what they're watching on television is monitored. Yes, that's very true. Now we'll move on to our next question, which is, apart from the toxic narratives in my industry, have you witnessed or observed any sort of positive storytelling or themes in our dramas? If yes, could you please provide us with a few examples? Okay, well, the biggest example I'm going to give you is of my drama that's on air since, Ramzan this year, which is Fairy Tale. If you look at it, it's the story of very real people. ठीक है ना? ज़्यादातर जो characters दिखाए गए, even though they may be slightly dysfunctional and mostly imperfect, but they are so relatable that they're being loved. जब भी कोई negative aspect आने लगता है उसमें, it is always beautifully countered by something positive. किसी के दिमाग में कोई गलत ख्याल आ रहा है, फौरन उसके एवज एक खूबसूरत एग्जाम्पल आ जाती उसी ड्रामा में, उन्हीं एपिसोड्स में. This is being
positive without hammering कि हम आपको सबक सिखा रहे हैं. This is the most beautiful way of storytelling that I have seen in a long, long time. And सटल वे में बताया गया सब कुछ कि like बहुत सटल वे में कि हंसते हंसते लोग बाद में रियलाइज करते हैं कि उस वक्त तो कहके मार रहे हैं ना, and they're like in stitches because some things are so hilarious, and then later on they're like, oh, okay, so this is what actually happened. That is how good storytelling is done. Other dramas में positive, let's see. I think आजकल एक women Okay. empowerment वाले भी बड़े important, you know, women I'm empowerment sorry. के लिए भी, I believe women Yes, empowerment. okay. Women empowerment though is a card that people play to make something stand out. Sometimes I think उसमें ज्यादती भी हो जाती है कि मर्दों को जरूरत से ज्यादा उसमें बुरा दिखा दिया जाता है. ऐसी बात नहीं है कि दुनिया के सारे मर्द बुरे हैं. ठीक है? There are some toxic very, very feminism good में बात people चली out जाती है। there. But most of the times, you know, the real us is going to be gray. You can't just be black or white. We always have this gray element to us. जहाँ कभी हम कहेंगे अच्छा नहीं ठीक है, इतना सही नहीं लेकिन चलो वो कर लेते हैं. So I'll tell you an example. अभी एक ड्रामा मैंने recently देखा है, उसकी चंद episodes आई हैं, and I think it's a limited series. It's called Razia. उसमें storytelling, literal storytelling के through उन्होंने दिखाया है कि एक लड़की जिसको बचपन से ही हर चीज से डिप्राइव किया गया है, वो किस तरह हर सिचुएशन को अपनी डिटर्मिनेशन से पॉजिटिव बना के आगे बढ़ती जा रही है. She has not done anything so bad कि उस पर पथराव होना चाहिए. छोटी मोटी चीजें तो हम सब अपने पेरेंट्स के साथ कर देते हैं, कोई बात छुपा लेते हैं, कोई बात छुप के कर लेते हैं. She's not done anything that is horrifically wrong. But I think that is a positive story कि हाँ माना बहुत सारे घरों में बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत सी बेसिक नीड्स एंड हुकूक को डिनाई किया जाता है. But this is a positive story कि देखो ना इसके साथ ये हुआ लेकिन इसने इस तरह से ये कर लिया और देखो कितना अच्छा हो गया, ये कोशिश की और देखो कितना अच्छा हो गया. तो for me this is positive. बहुत आपने इसको ब्यूटीफुली एक सम अप किया. बड़ी अच्छी एग्जांपल थी आजकल के ऑनगोइंग ड्रामा की. Exactly. That really provided us with a new perspective as well. Thank you so much, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am Saman, for joining us today and utilizing your time and distributing it equally amongst us.